Hello students, today we will discuss about procedures. In last lecture we have discussed about cursor. We have discussed about implicit cursor, we have discussed about explicit cursor, and now we will discuss about procedure. Now first, what is procedure? The PLSQL store procedure or simply a procedure is a PLSQL block which performs one or more specific tasks. इट इज जस्ट लाइक अ प्रोसीजर इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसा कि हम प्रोसीजर दूसरी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस में करते हैं, उसी टाइप से प्रोसीजर PLSQL में भी परफॉर्म होता है। इसमें प्रोसीजर क्या करता है? प्रोसीजर के लिए हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे और वो परफॉर्म करेंगे हमारा स्पेसिफिक टास्क। यहाँ पे कुछ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं अपने प्रोसीजर के लिए। So first characteristics is procedure are stand-alone block of a program that can be stored in the database. ये पूरा का पूरा आपका एक stand-alone block of program होता है, मतलब एक पूरा कोड होता है जो आपके डेटाबेस में परमानेंटली स्टोर हो जाता है। Call to these procedure can be made by referring to their name to execute the PLSQL statement. हम एक बार प्रोसीजर को क्रिएट कर लें तो हम उसके बाद प्रोसीजर को कॉल कर सकते हैं विद द बिगिन एंड एंड स्टेटमेंट और विद द एग्जीक्यूट स्टेटमेंट। It is mainly used to execute a process in PLSQL. Fine. It can have a nested block or it can be defined and nested inside the other block or packages. हम प्रोसीजर के अंदर नेस्टेड ब्लॉक्स का भी यूज कर सकते हैं या हम इसे किसी और पैकेज के साथ भी यूज कर सकते हैं। इट कंटेन्स डिक्लेरेशन पार्ट दैट कैन बी ऑप्शनल पार्ट। Second one is it contain execution part and exception handling part. Again, exception handling part is your optional, but execution part is your mandatory part of your procedure. The value can be passed into procedure or fetching from the procedure through parameters. These parameters should be included in the calling statement. Procedure cannot be called directly from select statements. They can be called from another block or through exec keyword. हम प्रोसीजर को कभी भी बाय डिफॉल्ट या डायरेक्टली सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ कभी भी कॉल नहीं कर सकते। हमें प्रोसीजर को एक बार क्रिएट करने के बाद उसको अगर कॉल करना है तो या तो हम एक अनदर ब्लॉक का यूज करें या हम सिंटेक्स exec कीवर्ड का यूज करें, तभी हमारा प्रोसीजर कॉल होगा। फाइन। तो यहाँ आपको बताया गया है कि आपके प्रोसीजर में 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज योर डिक्लेरेटिव पार्ट, जो कि ऑप्शनल पार्ट होता है। इसमें हम कभी भी डिक्लेयर कीवर्ड का यूज नहीं करते हैं। इट कंटेन्स डिक्लेरेशन ऑफ टाइप्स कि हमने कौन सा टाइप ले रखा है, अगर हमने कर्सर यूज किया है तो कॉन्स्टेंट्स कौन से हैं, वेरिएबल क्या है, ये सारी चीजें हम किस में इंक्लूड करते हैं? डिक्लेरेटिव पार्ट में। बट इट इज नॉट मैंडेटरी, इट कैन बी ऑप्शनल। नेक्स्ट वन इज योर एग्जीक्यूटेबल पार्ट। इट इज अ मैंडेटरी पार्ट और इसमें ये डिफाइन होता है कि हमें क्या टास्क या क्या एक्शन परफॉर्म करवाना है हमारे प्रोसीजर से। फाइन। सेकेंड चीज अब हमेशा ध्यान रखोगे कि प्रोसीजर कभी भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है जैसे हमारा फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है। थर्ड पार्ट ऑफ योर प्रोसीजर इज एक्सेप्शनल हैंडलिंग। दिस इज अगेन एन ऑप्शनल पार्ट। इट कंटेन्स द कोड दैट हैंडल्स रन टाइम एरर्स। तो जब भी हमारी रन टाइम एरर को सॉल्व करने के लिए हमें सॉल्व नहीं, हमें चेक करने के लिए अगर हम किसी का यूज करते हैं तो वो है एक्सेप्शनल हैंडलिंग। फाइन। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करता है वैसे ही आपका काम करेगा। फाइन। अब क्रिएट कैसे करते हैं हम प्रोसीजर को? तो हम क्रिएट के लिए जैसे हम टेबल क्रिएट करते हैं वैसे ही हम प्रोसीजर को क्रिएट करते हैं विद क्रिएट कमांड। create or replace, we are using one replace. Why we are using this replace? We are using this replace because if one of the procedure is already created in our database with this name, then replace that procedure with the new one procedure. For this we are using replace command. Fine. फिर हम यूज करेंगे is और as का। यहाँ हम पैरामीटर पास करते हैं, वो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी। उसके बाद हम बिगिन के अंदर हम प्रोसीजर की बॉडी लिखेंगे। बॉडी में क्या आएगा? जो आपको टास्क परफॉर्म करवाना है। उसके बाद आप एंड स्टेटमेंट और प्रोसीजर का नेम दे दोगे ताकि आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए। फाइन। यहाँ आप चेक करो कि एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है प्रोसीजर का। इसमें हमने क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर और प्रोसीजर का नेम दिया है। दिस इज ग्रीटिंग्स इज योर प्रोसीजर नेम एज बिगिन। इसमें मुझे कहीं भी किसकी नीड नहीं थी,
मुझे कहीं भी इसमें पैरामीटर को पास करने की नीड नहीं थी, डेटा टाइप की नीड नहीं थी, डिक्लेरेशन पार्ट की नीड नहीं थी, इसलिए मैंने उसको नहीं यूज किया। डायरेक्टली मैं एग्जीक्यूशन पार्ट के अंदर आ गई और दैट विल बी स्टार्टिंग विद द बिगिन स्टेटमेंट। यहाँ हमने dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट अंडरस्कोर लाइन और इसके अंदर मैंने हेलो वर्ड प्रिंट कराया है। तो ये क्या करेगा, इसने ये टास्क बता दिया कि आपको हेलो वर्ड प्रिंट करवाना है। आई हैव यूज एंड फॉर माई प्रोसीजर टू complete or execute. Now I will use execute greeting for calling my procedure, or I can use begin and end, and greeting is my procedure. I can call procedure by any of these two methods. Now, if I want to delete my procedure, again I'll use drop procedure and procedure name. जैसे हम टेबल को drop टेबल का नेम देते थे, वैसे ही हम प्रोसीजर के लिए यूज करते हैं drop procedure and procedure का name. Now we have one example. We have one table that we have to create with the 4 columns that are employee ID, employee name, job ID, and employee salary. Now मुझे ये कहा गया है कि I have to create one procedure. See what it is. Write a procedure to raise the salary of an employee basis on his or her job ID as follows. मतलब मुझे कहा गया है कि आप एक प्रोसीजर क्रिएट करो जो सैलरी में रेज करे एम्प्लॉय की according to their job ID. It means if he is admin, his job ID is admin, then the salary raise will be 9%. If job ID is TPO, salary raise will be 8%. If job ID is HR, then salary raise will be 7%. Or if the job ID is clerk, then it will be of 6% of salary raise. मुझे इसके लिए एक प्रोसीजर क्रिएट करना है। Now first of all मुझे क्या करना पड़ेगा, तो first of all I have to create one table. Fine. So we will create a table in our SQL command. Now I have a table. I have created table with create table employee. इसमें हमने columns दे दिए, हमें एक चाहिए employee ID, employee name, job ID and salary. So I'm running this. Okay, this name is already used by another object. What we will do, we will draw table employee, so that we can again create one more table, because we know in same database the table name should not be same. Okay, it is also referring by another table. Then I'll change the name of our employee table with employee 1. I have to put changes over here also. Fine. First I have created and run this. Again, this is used by another object. Okay. Now I'm running this. Yes, my table is now created with employee 1. Now I will insert values inside this. First I have inserting for admin, job ID admin, select keyword, insert into. Okay, we have missed values over here. Values. I hope we all are aware about the basic syntax of each and all. I'm running this. Yes, my one row is affected. Now next one is third, and now fourth one. Now we will see what our table structure is. Okay, we have 1. Now I'm running this. Yes, we have one table with the 4 columns, and these are employee IDs. Okay, we have mistaken about employee IDs. We have put 111 only. We have to put a change. What I'll do, I'll change the table name. Employee 12 12 12 12. Here I'll also change the name of employee ID. But
Now my table is created. I'll put values inside this. I'm running this table again, inserting values inside this, and now my value is inserted inside my table. I'll check my look of my table. Yes, I have created it with employee ID 111, 112, 113, 114. Now what is my procedure? So मुझे कहा गया है कि प्रोसीजर के लिए मुझे क्या करना है, मुझे कंडीशंस प्रोवाइड करनी है. अगर एडमिन है तो सैलरी रेज मेरा 9% होना चाहिए, टीपीओ है तो 8% होना चाहिए. So for this we will create a procedure. Here is my procedure. I have used create or replace procedure, and I have given the name of procedure. Now I have passed parameter of employee ID dot employee ID parameter, and I have fetched that parameter from employees table employee ID. Person type is showing we are using the same data type as we are using in this procedure as we have used in our previous table. Now as I have to create two variables for storing job ID and salary raise. So I have created job ID. Job ID will be same as employee table की जो हमने job ID यहाँ पे ले रखी है वो, इसलिए मैंने provide किया इसको job ID employee.job id and person type, it means same data type. Now I have created one more variable, that is salary raise. It is number type. I have to mention data type for this, so I have mentioned number data type, and this is my size of salary raise. Now I have to create an executable part. An executable part is start with your begin statement. So I have created one begin statement. Here we have to change our employee table name, so I'm changing this also so that we will not get any error during the execution. Employee update भी हमें कौन सी table को करना है? Now I think we have corrected. Now what I have to do, I have to select job ID into job ID from employee 1 to. We have to select job ID from employee table. कहाँ पे, जहाँ हमारा यूजर जो एम्प्लॉय आईडी प्रोवाइड कर रहा है, जब हम कॉल कराएंगे प्रोसीजर को, तो जो हम जॉब आईडी प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसकी इक्वल हो और उसकी जॉब आईडी फैच करे उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की जिसकी जॉब आईडी यूजर ने प्रोवाइड कराने को कहा है. केस क्या दिया गया है कि आपको क्या क्या कंडीशन, अगर जॉब आईडी एडमिन है तो आप क्या करो, सैलरी रेज 9% कर लो. अगर जॉब आईडी टीपीओ है तो 8% कर लो, एचआर है तो 7% कर लो, पीआर है तो 6% कर लो. नाउ वी हैव एंडेड आर ऑल दी केसेस. हमें यही चार कंडीशन दी थी, हमने कर दी. अब हमें अपडेट करना है क्या, एम्प्लॉय 1 टू टेबल के अंदर करना है. एम्प्लॉय की सैलरी को क्या कर देना है, जो इंक्रीमेंटेड सैलरी है वो कर देना है. तो व्हाट इज माय इंक्रीमेंटेड सैलरी, तो एम्प्लॉय सैलरी प्लस जो इंक्रीमेंट हुआ है दैट विल बी द फाइनल सैलरी ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय. और कहाँ करना है, जहां हमने जो जिस प्रोसीजर को कॉल कराने को कहा है उसके अंदर वो मॉडिफिकेशन कर दिया जाए. फिर हम क्या कह रहे हैं कि प्रिंट करा दो कि एम्प्लॉय की सैलरी एडजस्ट हो गई है. तो नाउ दिस विल प्रिंट एम्प्लॉय सैलरी इज ऑलरेडी एडजस्टेड. Now we will end our procedure. Afterwards we will call our procedure by this statement. Fine. Now I am creating our procedure. Let me run this. Yes, our procedure is now created. Fine. Now what I want to adjust salary of, now this is my procedure name. See, I'm calling my procedure for employee 111. I'll execute this. See, I have executed, and what statement is executed now, employee salary is adjusted. See, we will see our employee salary is adjusted or not. Our 111 employee salary is 30,000. Now what we have done, we have incremented of 9%. It means the salary should be more than 30,000. Yes, it is more. We have adjusted through our procedure. Now suppose I want to increase salary of employee 112. Then I'll again execute this statement. Again my procedure is executed. Now I'll check for 112. It is 20,000 in previously. What is updated salary? See, now we will got our updated. Previously it was 20,000 and now we will getting it 21,600 rupees. This is what our procedure works. Fine.
There is a difference between a function and a procedure. What is the difference? The difference is procedure doesn't return any value. It does not have any value to be returned by procedure, but function returns a value. Thank you. In next lecture, we will discuss about function.